Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, guys, for another English topic, and that is error detections. So, another very important topic, right? And इसमें जो है, this is the amalgamations of all the topics that we've studied up till now, right? This is a topic. This will test up your subject verb agreement. This will test up your tenses. This will test up your punctuations. This will test up your um, pairing words. All right, this will test up your uh, you know redundancies. This will test up your English spellings. This will test up your English um, syntax or English sentence writing structure. All right, तो इस टॉपिक के लिए आपके ये जो अभी जो मैंने ये जो टॉपिक बताया है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. Alright, तो इसलिए this is why I also kept it at the last because I wanted to you know have the clear understanding of the previous topics. क्योंकि जब वो पहले वाले आएंगे तभी you will be able to uh, solve up these of the things. Alright, so इसमें हम check करेंगे so what is this, and we're also discussing some of the examples that will follow. So a bit of introduction. In English literature, error detection refers to the process of identifying and correcting mistakes. It's a process, all right? It's a process of identifying, पहचानना, identify, all right, and correct, and to make it a correction of the mistakes that have been there in the sentence or inaccuracies in written works. All right. So this can include spelling and grammar errors. All right, grammar errors includes all these four: subject of agreement, tenses, prepositions, post prepositions, punctuations. All right. So even the similarity of the sentences, okay, the first part of the sentence is in the past, so the others should follow the same rule. All right. It's not like okay, um, dependent and independent clauses are having a very different um, sort of structures. So this is just an error actually, as well as errors in punctuations, syntax. Syntax is a writing uh, procedural. For example, formula. एक फॉर्मूला होता है ना मैथमेटिक्स में. अब उसका एक मतलब तरीका है. अब कोई एक आप सॉल्व कर रहे हो ना मैथमेटिक्स के बाद, अब इसके बाद आप वो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे. सिंटेक्स इज सेम. It's actually, a particular roadmap and a sentence structure. A particular sentence structure that has been used in a sentence or in a paragraph or in a, you call it, reading comprehension, or reading any script, reading any book, or reading any sort of you talk about. ठीक है जी. So as I already said, you need to have a very good grip on these two, on these some of the things, so that you could be doing very well in the error detection part. Right. So actually, this part is, there's no any more sort of things to discuss probably, because क्योंकि ये जो पार्ट है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द प्रीवियस थिंग्स. यानी कि इसमें आप कुछ कुछ समझने का है नहीं एक्चुअली एरर डिटेक्शंस में. तो इसमें जो है आप आपको ना ये वाली चीजें सेट करनी पड़ेंगी: सब्जेक्ट वर्ब, टेंसेस, prepositions, punctuations, स्पेलिंग्स. ठीक है. सेंटेंस रिडंडेंसीज. ठीक है. और इसलिए ये जो चीजें हैं ये हम इसलिए पहले हम कवर कर चुके हैं, ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आप ये वाले फॉलो कर पाएंगे. तो इसलिए दिस पार्ट रिक्वायर्स जस्ट अ प्रैक्टिस. देयर इज नो एनी अंडरस्टैंडिंग. एरर डिटेक्शन कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है. ठीक है. जिस तरह भाई पंक्चुएशन अलग टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब अलग टॉपिक है. Similarly, tense is just a whole different thing. It has all rules. एरर डिटेक्शन में कोई अपनी तरफ से रूल नहीं है. राइट. तो इसमें जो है वही चीजें हैं जो आप सब्जेक्ट वर्ब में रूल्स लगाते हो, पंक्चुएशन में रूल्स लगाते हो.
अब हम ये हम जो है ना ट्राई करते हैं, ये एग्जाम्पल्स सो दैट हम उससे अंदाजा लगाएंगे कि भाई क्या इसमें इनमें प्रॉब्लम्स हैं या इनमें एरर्स हैं, और इसमें एरर इसमें नहीं भी होते फर्स्ट। ऑलराइट, सो पहला सेंटेंस है, ही हैज बीन ट्राइंग सिंस 2 years। अब द एरर इज सिंस, बिकॉज द इशू सिंस इज कि हमने सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट वाज सिंस इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर इज यूज्ड फॉर अ टाइम पीरियड। सिंस इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कोई एक पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर ईयर, सिंस 1920, राइट, सिंस मॉर्निंग, राइट, सिंस एनी कोई भी एक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ पीरियड, 2 years इज अ ड्यूरेशन, 2 years इज अ पीरियड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लगाते हैं। तो द सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 years rather than since। Perfect. By next December, by next December, I have been working in the sales department for just over a year। अब इसमें इशू ये है, बाय नेक्स्ट दिसंबर, ये जो बात हो रही है, दिस इज द फ्यूचरिस्टिक बात। बाय नेक्स्ट दिसंबर, अब नहीं, ये दिसंबर की बात हो रही है। बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट भी लगा हुआ है, नेक्स्ट इज आगे आने वाला, नेक्स्ट इज द कमिंग वन। नेक्स्ट एक पर्टिकुलर चीज होती है ना, आप अभी जो करंट में है, प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट, ऐसे होता है ना। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस इसकी वजह से ये वाला जो टेंस है ये गलत इस्तेमाल हुआ है। इट विल हैव टू कैरी a futuristic sense, like by next December I will have been working in the sales department for just over a year। I will have been, all right। So this is how it carries out actually। Let me um, you know, open up the open up the PDF, or sorry, so that we will be having the correct answers as well। This, okay, okay, now this will do good, this is really good। So he's been trying, I said since is wrong, so we'll, you know, what we do, we'll do uh, this, and we'll use for, sorry, we'll use for, and I'm also making it highlight so that you would understand what am I talking about। और when you just come up and review your things, तो आपको ये पता चलेगा अच्छा ये गलती की, and this is the correction, right। So by next December I will, right, I will, there will be addition। so the error is I have been, the tense is the error, I have been। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा A B C or, so you will have to make it correct के I will have been यहाँ पे। Okay, the student association would appreciate hearing from anyone which is interested in organizing a theater club। अब now there is an issue of which, because यहाँ पे there is an anyone, when you talk about particular body or particular pronoun जो कि इशू कर रहा है, और जो कि किसी नाउन के हवाले से बात करेगा, यू ऑलवेज यूज हु, यानी कि कोई बंदा, किसी की बात हो रही है ना। द स्टूडेंट एसोसिएशन वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, ऑलराइट, any particular body, anyone who's interested, which is interested in, not this is anyone is for, you know, you can call it for living things, which is not just for non-living things probably। Regardless of the amount of obstacle to be overcome, the program will be a success। So this is all correct, but there could be an spelling of the issue of spelling, all right।
So the spelling could be program, right? So this is a good one because even American English, you write a program, but for the British English, because we write that English in Pakistan, probably और हर मतलब उसमें तो that will be program and program will be a success. So this could be uh, error here. So let me make it green. We'll also make it a green. So these coloristics, will help you to remember things actually. इसलिए हम जो है ना हाईलाइटर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें चीजें भूले ना. Just to make notes and things to be made easy for clear understandings. Okay. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. So this is the issue. When you are talking about she, the correct belongingness would be herself rather than himself. Himself is for the male gender. So it will be yeah. So I was talking about this is how you identify things because and please do not come up with the faster sentence. I mean to say is कि आपने आधा सेंटेंस पढ़ा और आपने कहा कि भाई ये है नो पूरा सेंटेंस पढ़े हमेशा 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 पहले डिविजन के लिए पूरा सेंटेंस जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं होगा कि इसमें एरर क्या है. Just don't be in a rush, please. Avoid rushing. Just be calm and read a whole sentence. Just read a whole sentence. This will give you understanding पे अच्छा बने. जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी will be doing good. George has not completed the assignment yet, and Maria hasn't neither. So there is the issue. अब hasn't neither, they both are negatives. They cannot come into comment line together. Hasn't neither. Now, ये ऐसे हो सकता है. You can put it hasn't either. Hasn't either. Because तब जो है ये मीनिंगफुल हो जाएगा. एंड either तब इसका जो है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हो पाएगा. Otherwise, this won't be complete. Hasn't neither is never English structure. So haven't, hasn't either. यानी कि जॉर्ज ने भी काम नहीं किया और मारिया ने भी काम नहीं किया. So in other words, if I could just make it very simple, neither Maria nor George, neither George nor Maria has completed the assignment, completed their assignment. All right, इस तरह. This is how it works actually. Haven't completed their assignment. After Rashid had returned to his house, he was reading a book. After Rashid had returned to his house, right? Right. So after Rashid had returned to his house, he was reading a book. अब यहाँ पे there's the issue of tenses कि आपका जो हमने ये आपने बात पढ़ी होगी कहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. राइट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कि अगर आपका पहला सेंटेंस क्या हो पास्ट ये हो पास्ट परफेक्ट में हो तो अगला वाला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर Rashid had returned to his house, he had been reading a book. He was reading होगा he had been. तो ये एक रूल है कि past perfect will go into past perfect continuous, past perfect continuous. तो इस तरह ये जो है ना ये सारी चीजें कवर होती हैं. तो he was नहीं आएगा
क्या आएगा? he he have been. So after that should have written without he had been reading a he'd been reading he'd been reading a book. So, okay. Then after Haris eaten dinner, all right. Now there is an issue with eating. He wrote several letters and went to he wrote several letters and went to bed. So after के साथ you always use the first form, like after uh, after Haris ate dinner, for example, because there is wrote, you cannot write eat, all right? He wrote several letters and went to bed because the whole sentence is in the past. So the correct sentence will be after Haris ate dinner, after Haris ate dinner, he wrote several letters and went to bed. After Haris eaten dinner, ये जो मैं सेंस नहीं दे रहा, ठीक है? और for sense के लिए you need to have a very strong grip in on your reading, on your reading uh, practice. Reading a lot will really help you out, and it will really make things easier for you. So book reading करोगे especially. English के लिए I guess there is simple one thing, and this is just to read. Believe me, it will really help you a lot. और फिर आपको कभी इंग्लिश इस तरह पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, the way you are the way we actually do, because now English is an I guess literature है, and this always takes time to memorize things, to understand things. तो इससे अच्छा यही है कि वो just um, understand the concept rather than ratify the things. Okay. उसके अलावा every woman should vote for the candidate of their choice. You might be thinking there is not any mistake, but there is a mistake. All right, the mistake is of there, because there is a plural pronoun. What is a plural pronoun? कि आप जो है ना देर हमेशा वहां पे लगाते हो जहाँ पे प्लूरल सेंस हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस भी बताया था, कौन सा वाला, ये वाला सेंटेंस बताया था ना मैंने आपको कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले सेंटेंस में मैं ऐसे लिखता हूँ, नीदर जॉर्ज GORGE nor Maria has completed their assignments. Okay, so now अब ये देर देखिए ना, this there is प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे जॉर्ज एंड मारिया है, तो इन दोनों ये दो बंदे हैं, दो नाउन हैं, उन दोनों को नाउन को दिखाने के लिए we use to have a plural pronoun as well, just क्योंकि उनकी असाइनमेंट्स दो होंगी ना, दो बंदे तो दो असाइनमेंट्स देयर, तो इसलिए ये जो देयर है ये ये वही वाला है, ठीक है? और इसमें जो है ना ये हमेशा प्लूरल का सेंस देता है, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि कहीं भी एवरी आ जाए, एनी आ जाए, वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल नहीं लगाते. तो इसलिए यहाँ पे आएगा एवरी वुमन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हर चॉइस. हर, और हर एक की अलग अलग चॉइस होगी ना, एवरी वुमन, एवरी वुमन. ऑलराइट, तो इस तरह जो है और यहाँ पे ये अलग अलग नहीं भी हो सकते, बिकॉज जॉर्ज एंड मारिया दे कैन बी ऑफ द क्लास फेलो, और उनकी असाइनमेंट सेम भी हो सकती हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी हो सकती हैं. ऑलराइट, तो इस तरह प्लीज इनको ऐसे मिक्सअप ना करिएगा. बट फॉर हेयर एवरी वुमन वो अलग अलग है, हर एक वुमन की अपनी अपनी चॉइस, हर वुमन की अपनी अपनी चॉइस. देयर हम नहीं लगा सकते बिकॉज इट विल गिव अ प्लूरल सेंस, बट हेयर एवरी के साथ हमेशा यूज अ सिंगुलर. Okay, well, the last one is the sun rose before I got up. So this is a very fine sentence. मेरे उठने से पहले आज सूरज तुलू हो चुका था. The sun rose.
फ्लू होना यानी रोज होना. Okay, this is how you add up things particularly, and we'll discuss up some of the both as well in our coming lectures. Uh, but for this, you need to have a very strong practice by yourself, because this is only a particular thing in English. When we talk about, you need to have a very strong grip at your own, and you need to memorize all the things uh, by, you know, uh, uh, by your own, because हमने ये चीजें पढ़ी हैं वो ये उन्हीं का ही अमलगमेशन है, ये उन्हीं का मिक्सचर है. I'll I'll be sure that if I'm giving any particular link when I'll upload this lecture, so जब आप उसको देखेंगे तो it will clarify the previous things that you already studied. तो अगर आप वीडियो देखिएगा then it will help you clarify a lot of things. Thank you so much.